Okay, hello everyone. We're going live again with another yet amazing chapter of English Literature Class 12th. And we'll do this chapter very nicely. We'll cover this chapter very nicely. We'll read this chapter together. So let's get started with this. Journey to the End of the Earth, Tishani Doshi. Before you read, if you want to know more about the planet's past, present, and future, then Antarctica is the place to go. Which is given, this is a sort of a core type of thing before the starting of the chapter, which he is mentioned. Born voyage. Okay. Early this year, I found Mosul. Why I'm saying Mosul? Okay, anyways, again, let's get started. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic scholastic, heading towards the coldest, driest, and the windiest continent in the world. Antarctica, my journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras, or Madras, whatever you want to say. Of course, Madras is nothing, but Madras is nothing. Actually, Madras and Madras. So Madras was not the name. Madras was the name. Okay, whatever. Okay, and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies, and at least as many ecospheres. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an airplane, and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed by an immediate and profound wonder. Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass, Gondwana land. Part of history, 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent, Gondwana, did indeed exist. Centered roughly around the present day Antarctica, things were quite different then. Humans hadn't arrived on the globe scheme. Of course, मतलब जैसे Homo habilis, Homo erectus, Homo australopithecus, Gamma-pithecus, and all that stuff had arrived. Later on, 12,000 साल पहले ही कुछ humans का Homo sapiens, perfect humans, European cars दिखते हैं humans, वो इनका existence हुआ है, और जो पुराने species थे उनको extinct हुए हैं. Things were quite different then. Humans hadn't arrived on the globe scene, and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. For 500 million years, Gondwana has thrived, but around the same time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. To visit Antarctica now is being to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be headed. It's to understand the significance of Cordillerian folds and Precambrian granite sheet. यहाँ पे एक चीज़ आई थी academic स्काई, एंड यहाँ पे अभी दो और भी जो नए टर्म्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट टर्म है. इससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी ऑथर थी, जिसको इतने सारे टर्म पता थे. इंग्लिश की ऑथर होने के बाद भी ज्योग्राफी में भी इनकी कोई कमी नहीं थी. How do geological phenomena help us to know about the history of humankind? तो हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में जियोग्राफिकल फिनोमिना हमें कैसे बताता है? ऑफ कोर्स ही बातें हमारे को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, आर्कियोलॉजिकल फैक्ट पता चलते हैं, उनके कार्बन डेटिंग से अपन को पता चल जाता है कि वो कितने साल पुरानी चीज़ें हैं, एंड ऑल दैट स्टफ विच वी ऑलरेडी नो फ्रॉम साइंसेस. ठीक है. And Precambrian granite shields, ozone and carbon evolution and extinction. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas, South America drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create a cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world. For a sun worshipping South Indian like myself, to sun worshipping South Indian, सन वर्शिपिंग मतलब जो सूर्य की पूजा करते हुए साउथ इंडियंस है, उनकी उनकी अगर मैं बात करूँ अपनी तरह, ऐसे उन्होंने बोला. ठीक है. 90% सन वर्शिप, हम तो सन की पूजा करते हैं, हमारे को सन लाइक ऐसे सन की पूजा, और इन दैट सेंस आल्सो शी कुड बी सेइंग कि बहुत ज़्यादा गर्म रहती है साउथ की चीज़ें. 2 weeks in a place where 90% of the earth's total ice volumes are stored in a chilling prospect is a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic functions but also for the imagination. बस एकदम कांपने लगते हैं कि अगर हम सोचें भी इसके बारे में, तो it's like walking into a giant ping pong ball which is made up of snow, devoid of any human markers. No trees, billboards, buildings. You lose all the earthly sense of perspective and time here. The visual scale ranges from the microscopic to mighty. विजुअल स्केल, हालांकि इसमें जो जीव है वो काफ़ी है, जैसे कि अपन बात करें मिजेस एंड माइट्स, जो होते हैं अपने क्या कहते थे इसे, माइट्स को दीमक, दीमक, राइट. सो we are saying कि two blue whales, which are the largest existing mammals on the earth, and icebergs as big as countries
कंट्रीज के जितने तो इनके आइसबर्ग्स है। अभी सोचो ना, ओशियंस इतने बड़े होते हैं, कंट्रीज से बहुत बड़े होते हैं, उनके अंदर इतना अगर एक बहुत वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एक आइसबर्ग, ऑब्वियसली इट कैन बी द साइज ऑफ अ कंट्री, एंड दैट्स व्हाई शिप्स डूब जाती है आइसबर्ग्स की वजह से। ठीक है, टाइटैनिक की बात करें तो ठीक है, एज बिग एज कंट्रीज उसकी याद ना दिलाए तो अच्छा है। एनीवेज, द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड was the size of Belgium. Days go on in the surreal 24 hours Austral summer night. So summers may only days are present, winters may only nights are present, for the 24 hours actually, right? So and an ubiquitous silence, interrupted only by the occasional avalanche or carving sea sheet, consecrates the place. It is an emotion that will force you to place yourself in the context of the ecological, geographical, and history. And for humans, the prognosis isn't good. ठीक है, so what is the meaning of prognosis? This will be just searching because ये एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग मुझे भी नहीं याद आ रहा है. इट्स बेसिकली ओपिनियन बेस्ड ऑन मेडिकल एक्सपीरियंस और लाइकली डेवलपमेंट डिजीज और इलनेस, जजमेंट अबाउट हाउ समथिंग इज डेवलप इन द फ्यूचर. हाँ तो एंड फॉर ह्यूमन प्रोग्नोसिस इट्स नॉट गुड. अब ये क्या कह रही है कि आगे वो जो चीज़ कह रही है कि हाँ हमारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोलर आइस कैप्स मेल्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें ह्यूमंस के लिए अच्छी नहीं है. अब तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है. इन्होंने कुछ कुछ इनसे पिछले पेज में भी दे दी थी कि ओजोन के बारे में या फिर अपन ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो सब चीज़ें इन्होंने ऑलरेडी बोली थी, बट यहाँ पे वो चीज़ वो कहना भी चाहती है. इसमें मैं एक सेकेंड, मेरे पास क्योंकि ना दो ऐसी किताबें हैं और जो एक किताब है उसमें इसके वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं. So I would like to open that book as well, ताकि अपन को जो भी वर्ड मीनिंग्स चाहिए होंगे वो अपन एक किताब से देख सकते हैं. अच्छा, इसमें नहीं लिखे हुए हैं, नेवर माइंड. ओके, आगे बात कर लेते हैं फिलहाल अपन. Human impact. What are humans doing to this thing? Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years. Right? So I was saying that 12 साल, 1000 साल, barely a few seconds on the geological clock. Barely a few seconds क्यों बोलते हैं? क्योंकि टाइम जो अपना वो 450 मिलियन ईयर्स है, उसके कंपैरिजन में जो टाइम है ये बहुत ही छोटा है. ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट अ ह्यूज ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities in the growing fashion, right? The rapid increase of human populations has left us battling with our other species for limited resources, right? And the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. And this is what is called greenhouse effect, which is slowly but surely increasing the temperature or average global temperature. I'm sorry. So the climate change is one of the most hotly contested environmental debates of our time. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Will the Gulf Stream ocean current be disrupted? Will it be the end of the world as we knew it? Maybe, maybe not. Either way, we don't know what that actually has to happen exactly. That's why we call something called God, जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन सब चीज़ों को होल्ड करने के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए, राइट? ठीक है, या फिर वट एवर सब नेचर का कुछ चीज़ है. एंड आई गेस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ what is this? Why is this thing, this ajeeb सी चीज coming? Okay, I'll like to take a photo. Nice. Okay, anyways, so I was like, what was it telling was कि यहाँ पे जो अपन का issue है there. Well, maybe or maybe not. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores half million year old carbon records trapped in this layer of ice. If we want to study and examine the Earth's past, present, and future, Antarctica is the place to go. Students on ICE, the program I was working with on the Scholar Sky. So we had discussed about academic Scholar Sky. See, academic, right? So academic.
समथिंग सिमिलर टू दैट ओनली. Academic जो हमारा प्रेजेंट डे वर्ड है उसके हिसाब से aims to do exactly this by taking high school students to the end of the world because they're the future, right? And providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect of our planet. It's been in operation for 6 years now, headed by the Canadian Chief of Green, which who नाम में वही बंदे ये ग्रीन है सॉरी, grief नहीं है, anyways, who got tired of carding celebrities and retired rich. So basically वो बूढ़े हो गए ये सोचते सोचते, वो कि सेलिब्रिटीज को बोलेंगे कि तुम सेलिब्रिटीज को उन्होंने ओन किया. गॉट टायर्ड एज इन भाई इतने पैसे खर्च कर रहे हैं नेचर को बचाने के लिए लोगों को आइडियाज देते हुए, और लोग मान नहीं रहे, नेचर को वो बचा नहीं पा रहे, तो अपना खुद का कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जिसमें हम खुद जाके बच्चों को जो हमारे फ्यूचर है उनको सिखाएं, उनको ट्रिप्स पे लेके जाएं, ऐसी ट्रिप्स पे, क्योंकि ट्रिप्स पे ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे लोग, और वहाँ जाते ही उनको जो रियल लाइफ रिस्पेक्ट मिलेगा उससे हम खुद ही सीखेंगे. दे वुड इवॉल्व बाय देमसेल्व्स. अगर खुद इवॉल्व होते हैं किसी के कहने से. हम सेलिब्रिटीज को मानते, मतलब कुछ लोग सेलिब्रिटीज को बहुत मानते होंगे, बट इन टर्म्स ऑफ नेचर और इन टर्म्स ऑफ सम एफर्ट व्हिच वी हैव टू डू फॉर देम दे कुड डू, बट फॉर द नेचर दे आर जस्ट लाइक दैट दोस टाइप ऑफ पीपल, राइट? सो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं. तो उसके बाद रिटायर हो गए. There's curiosity seekers who could give back in a limited way. With students on ICE, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age that when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. राइट. सो ऑलरेडी उनकी एक ऐसी एज है जिसमें वो नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं. ठीक है, वो सब नए नए फंक्शंस करना चाहते हैं. उनके लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है. ठीक है. द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल is because it is possible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. It's easy to be blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude or longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is really real. क्योंकि आप लगातार देख रहे हो कि ऐसा होता चला जा रहा है. ठीक है. नहीं तो अगर नहीं हो रहा होता तो किसी को फर्क न पड़ रहा होता, बट बहुत लोग इसके बारे में अवेयर है भी सही. तो ये क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो प्रिवेलिंग है. Antarctica, because of a simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the microscopic phytoplankton, no, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. These single cell plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region. And the global carbon cycle, in the parable of the phytoplankton, there is a great metaphor for existence. That take care of small things and the big things will fall into place. Means यहाँ पे ये मेटाफर है. ठीक. कैसे अपन पोएम से मेटाफर करते हैं, शायद ये वही वाला मेटाफर है. एज फार एज आई नो इसका मीनिंग तो ये है कि छोटे छोटे बदलाव से ही बड़ा बड़ा चेंज होता है. यहीं से मुझे नील आर्मस्ट्रांग की एक कोट याद आती है, वन स्टेप फॉर मैन ग्रेट लीप फॉर मैनकाइंड. जैसा उन्होंने वन स्टेप लिया था मून पर जाके, और उससे बहुत सारी चीज़ें मून के बारे में ही हमें पता चल गई थी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आज भी हम मून पे जाने की ख्वाहिश रखते हैं. इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुली भेज दिया मून पे एंड ऑल दैट स्टफ. एंड अभी अपन करंटली साउथ पे सबसे पहले हैं जो जाने वाले. तो इंडिया इज ऑल्सो, इंडिया स्पेस में लेट आने के बाद भी इट हैज़ डन so many developments and all that stuff. Walk on the ocean. My Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurrence just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. Right. एक यहाँ पे एक चीज देखो. This is what is the disturbance. Although okay, ठीक है. But we should also value their thingy कि वो जिस टाइप से सराउंडिंग में है. But sorry for the disturbance actually. आई एम जस्ट थिंकिंग कि मेटाफर कैसे है, तब तक मैं आप भी सोचो कि ये मेटाफर कैसे है. सिंगिंग क्लासेस गोइंग ऑन, राइट? ओके. सो ये मेटाफर कैसे है इसके बारे में मैं सोच रही थी. टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स फॉल इनटू प्लेस.
अच्छा तो fall into place. अरे ये जो metaphor है ना यार, ये next level है यार. ये metaphor. This is before words, literally, man. क्या क्या बहुत The example of small grass called phytoplankton can be studied in this context. These microscopic grasses undergo the process of photosynthesis and serve as food for a number of marine birds and animals. And the author says if there is some further depletion of the ozone layer, it will affect the phytoplankton carbon cycle of the globe. This whole process can jeopardize the existence of all the marine birds and animals. So if we take care that the process is carried over by these small grasses are carried out properly, the bigger animals and birds will also fall into the place on their own. मतलब अगर मैंने फाइटोप्लैंक्टन की केयर कर ली तो मुझे बाकी चीज़ों की केयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अपने आप हर्बीवोर्स कार्निवोर्स सभी अपने प्लेस पे आ जाएंगे जैसे आना चाहिए. A minor environment change may give rise to dramatical developments. But so what is the metaphor? Okay. About phrase that is used in the majority of ways to show that something has the same qualities as other thing. Her words were a knife to his inner heart. मतलब एक knife की तरह थे. Without using it as a like we do this thing. Take your small things and big things will fall into place. कोई metaphor कैसे है? Take care of the small things. मतलब इसमें basically यही है कि and the big things will fall into place. अभी मेटाफर है बट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा मेटाफर कैसे है. हाँ मतलब कैसे है मतलब कि इसको हमने लाइक और हमने किस मिलर बोला इसे. स्मॉल थिंग्स को अपन ने क्या किसकी तरह बोलने का है. आई डोंट नो. Walk on the ocean, my Antarctic experience was full of such epiphanies, but the best occurrence occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. The Skolowski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which were preventing us from going any further. The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. So we were all 52 of us kitted out in the Gore-Tex and glass, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. Underneath our feet was a meters thick ice pack, and underneath that, 180 meters of living. Hi, Sahab. Okay. Uh, so there were all 52 of us kitted out in Gore-Tex and glass. Excuse me. 180 meters of living, breathing, all water in the periphery. Crab-eater seals were stretching and sunning themselves on the ice floes, much like the stray dogs will do under the shade of a banyan tree. It was nothing short of revelation. Everything does lead the net. Actually, you know what? ठंड की चक्कर में this is not I am of course a Hindu. It's first okay. Let's बस सभी भेज सकते हैं इसमें कोई okay. And this I'll be sure भाई साहब बहुत ठंड है यार. Well actually भाई साहब नहाने की वजह से हो बहुत बोर जगह में ठंड जाती ही नहीं है यार आने के बाद यार. ऐसा मत करो मेरी जान लाइफ में कुछ अच्छा करो. ये सूट उसी पे करते हैं जिन्होंने एक्चुअल में मीम बनाई है.
In the periphery crater, seals were stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. It was nothing sort of a revelation. Everything does indeed connect. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play of our planet. How much would be Antarctica were to become the warm placement and it you once used to be? It used to be a grassland earlier. Will it be around to see it, or would we have gone the way the dinosaurs, mammoths, and woolly rhinos? Who's to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years. But what a difference a day makes. But what a difference a day makes. राइट एक दिन में ही हम बहुत नॉलेज दे सकते हैं लोगों को एंड सेकेंडली यही अपन ने मेटाफर यहाँ पे यूज भी किया था कि जो स्मॉल थिंग्स को अपन देखेंगे तो लार्ज थिंग्स हो जाएंगी और इसी के साथ अपन एंड करते हैं अपना ये वाला सेशन बाय बाय ऑल ठीक है एंड वी सी यू लेटर ओके बाय 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 oh my god it's looking like magic bye